Orani town is one of the low-income settlements in Karachi. People are living with minimal facilities or even without facilities in some cases. However, people are willing to change their life by struggling for basic facilities, such as water supply, sanitation, health, and hygiene. Pakistan Red Crescent Society, PRCS, Sindh Provincial Branch has been working for community development in this area since long. PRCS, with the support of the German Red Cross, initiated its first urban resilience project in 2019 under the umbrella of the Improving Community Resilience (ICR) project in Badin and Karachi. इस तरह से आप जो कचरा है अपने घर का किचन का किस तरह सेपरेट करेंगे, किस तरह से अपने उसको जो कचरे में से जो चीज़ें बन सकती हैं उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, उसका एक कंपटीशन हो रहा है जिसकी अवेयरनेस कैंपेन भी आपके पास चल रही है। कुछ जो सरकारी बैंक में हैं उनको भी हम आपके पास ले आए, उसमें के इलेक्ट्रिक के साथ भी आपका लिंक डेवलप करेंगे। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं जो कचरा उठाते हैं उनका भी आपने काम देख लिया। जहाँ तक ये इनामात रखे गए हैं तो ठीक है, इनाम होते हैं, उसकी वजह से लोग ज़रा मोटिवेट होकर काम करते हैं, मगर मेरे ख्याल में जब ये इनामात नहीं होंगे उसके बावजूद भी आप अपने घरों की सफाई रखेंगे और टीम अभी से इस पे काम शुरू कर लें अपने घरों की और मोहल्ले की सफाई, क्योंकि टीम आपके पास किसी टाइम भी आ सकती है और आपके घर को देखने के लिए कि आपका घर साफ है। एक दिन नहीं आएगी, ये अभी लगातार चलता रहेगा, तो आप तैयार रहें, ये आपका इम्तिहान है और सफाई आपके लिए अपनी भी ज़रूरी है, सिर्फ इनाम के लिए नहीं। मेरे ख्याल में उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने फ़वाइद हैं, घरों में बीमारियां कितनी कम हो जाएंगी आपकी और कितने आपके वसाइल जो उस चीज़ों पे लगते हैं वो नहीं लगेंगे। आप लोगों को समझाया जा रहा है, पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि गलियों को सफाई सुथराई रखें, सफाई निफ्स ईमान है। आप कचरे फेंक रही हैं बाहर, शॉपर फेंक रही है बाहर, ये बीमारी फैल रही है। आप डब्बे को शॉपर को अलग रखें, पेपर अलग रखें, हर चीज़ को अलग रखें। सब्जियों के बताया गया, खेतों खाद वगैरह के लिए बताया गया किस तरह खाद बनाया जाता है, तो आप इस तरह खाद बनाएं, कचरों को अलग करें, सब्जियों को अलग करें, ये आप लोगों को समझाया गया है। और आप लोग मेहनत करें, गलियों में अपने अपने दरवाजों को सफाई रखें। Supporting local actors to undertake urban resilience activities in urban communities can be a powerful way to build social cohesion, improve livelihoods, and make cities more livable. पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी पहली मर्तबा एक ऐसा तजर्बा कर रही है जिसमें वो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पर ये एक हाइजीन और सैनिटेशन और वॉश का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। To support this, the Red Cross Red Crescent Climate Center and partners have developed an Urban Action Kit. The Urban Action Kit is a quick start, low-cost, do-it-yourself guide to urban resilience. The Urban Action Kit comprises 7 modules and each module has 3 to 4 actions that are being piloted globally. इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो है लोगों की जहन साजी थोड़ी सी कर पाएँ और उनकी थिंकिंग को थोड़ा सा शिफ्ट दे दें कि वो ये सोचें कि छोटे छोटे एक्शन से हम अपने मसाइल को, अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं। The German Red Cross, with the support of the German Federal Foreign Office, GFFO, funded the piloting of a few actions under one module: urban water sanitation and hygiene, urban wash, in collaboration with PRCS. कराची में अगर हम स्लम एरिया की कच्ची आबादी की बात करें, वहाँ भी 2 किस्म की कैटेगरीज पाई जाती हैं। एक वो जो सेमी अर्बन है और एक वो जो बिल्कुल ही रूरल स्टाइल में है या बिल्कुल ही कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ बुनियादी वसाइल भी मैसर नहीं है। हमने औरंगी टाउन की एक बहुत कच्ची आबादी है जिसको अल अक्ज़ा कॉलोनी कहते हैं, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने वहाँ उसको लॉन्च किया। It was piloted in the 20 streets of Al Aqsa Colony, UC16 of Orani Town, Karachi. The following actions were performed in the project area. वहाँ गंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं, पीने के पानी के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, कचरे के मसाइल हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के। Household waste segregation competition. Behavioral change for sanitation workers. Hand washing workshops in schools. In the waste segregation competition, PRCS promoted the concept of reuse, recycle and reduce, 3 rupees, and waste segregation in collaboration with Ghaziabad Union Council, Sindh Solid Waste Management Board, SSWMB, and other public and private stakeholders. The community was sensitized through household awareness sessions about waste segregation,
3 rupees, and their benefits, for example, making compost from kitchen waste and using plastic bottles for making household decoration pieces and glass bottles that can be reused. As the waste management at the household level is mostly done by the women, so promoted their participation. Women took a keen interest and worked as frontline activists to run this campaign with the support of men. मेजर 3 एक्टिविटीज़ थी, जिसमें हम लोगों ने पहले एक्टिविटी में स्कूल और कम्युनिटी के साथ हेल्थ एंड हाइजीन के सेशन किए थे। जो स्कूल है हमारे पास, उनके साथ बच्चों के साथ हमने हैंड वॉशिंग एक्टिविटीज़ भी कराई थी। उसके बाद हमने वेस्ट सेग्रीगेशन अवेयरनेस सेशंस के 3 आवर्स पे किस तरह से वो वेस्ट को जो है यूज़ करेंगे, किस तरह से रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है एंड रीसाइकिल करना है। गली में जो है हमने डस्टबिन जो है बाहर 3 डिफरेंट कलर्स के लगवाए हैं, जिसमें वो वेस्ट अपना सेग्रीगेटेड वेस्ट जो है वो डालते हैं। घरों में भी अब वो अपना वेट वेस्ट जो होता है, जो किचन से निकलता है, तो उससे वो जो है मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स हैं वो उससे कंपोस्ट बनाती हैं, और बाकी का जो ड्राई वेस्ट है उससे वो घर की डेकोरेशन की पीसेस और शो पीस बनाती हैं। To make this attractive for the community, incentives/prizes were given to the best performing households. It had been very significant that most of the women and girls participated and won the prizes. This effort reduced a big amount of garbage at the dumping points. The waste segregation competition has been a very exciting action for household women in targeted streets. They expressed that they had no idea about things to be used again as decoration pieces. The team transferred skills and knowledge, but the collection of segregated garbage needs special arrangements by the SSWMB. Through this process, behavior changes to reuse and reduce household waste were observed in the targeted community. However, it is now common that women are reusing plastic bottles for their domestic purposes as decoration pieces. लेकिन यहाँ पे हमें मीटिंग में ये चीज़ बताई गई, कचरा हमें डस्टबिन में डालना तो है, लेकिन एक ही सा कचरा एक ही डस्टबिन में तो हम वैसे भी डालते ही हैं, लेकिन अलग अलग डस्टबिन में इसलिए डालना है ताकि हमें मुश्किल नहीं हो, अलग करने में आसानी हो। ठीक है, एक तरफ गीला कचरा डालेंगे, एक तरफ सूखा कचरा डालेंगे। बाकी ये खाद बनाई मैं इसमें सब्जियों का छिलका वगैरह जिस तरह से हमें बताया गया था ना, वैसे ही मैं बनाई हूँ। ये शॉपर से मैंने ये बैग बनाया है। ये बोतल को कटिंग करके ना, ये शोपीस होता है, खराब हो गया था, फेंका रहा था, इससे बेहतर मैं इसको लगाकर इसमें ये देखिए, इसको इस तरह से हम लगा सकते हैं। Behavioral change for sanitation workers. In collaboration with SIN Solid Waste Management Board, SSWMB, PRCS identified sanitation workers in Ghaziabad Union Council who are working in the target area Alagza colony and assess the gaps in sanitation workers' knowledge and safety kits. Based on these findings, PRCS conducted awareness sessions on hand washing, basic first aid and provided sanitation workers safety and first aid kits. This helps them to reduce their work-related risks and makes them able to have quick access to first aid. SSWMB appreciated and ensured the use of kits by selected sanitary workers. If they use kits properly, they can minimize risk effectively. हमारे पास एक मैनुअल स्वीपिंग का काम होता है, जो रोडों की सफाई सुथराई, और दूसरा हमारा काम होता है डोर टू डोर कलेक्शन। हिलाल हमारा के साथ पार्टनरशिप हुई है कि उनके साथ पार्टनरशिप इस हवाले से हुई, सफाई के हवाले से और लेबर के सेहत के हवाले से बातचीत की गई, और लेबर को किस तरीके से मतलब सेफ़ रखें, किस तरीके से उनको मतलब महफूज रखें बीमारी से। हिलाल अमर से हमने ये इतना बहुत सीखा है कि उन्होंने अपने अमले के साथ हमारे वर्कर जो सैनिटरी वर्कर हैं उनको बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया सफाई के हवाले से, सेहत के हवाले से। और लोग पहले कचरा बहुत रोडों पे फेंकते थे, फिर लोगों ने नीचे फेंकने के बजाय फिर हमने वो बिन्स में कचरा उन्होंने रखा और सफाई रहती है वहाँ। ये एक मैसेज है कि आप सब हमारे साथ मिलकर शहर को साफ रखने के लिए हमारे से ताउन करें। शुक्रिया। Hand washing workshops in schools. 2 schools, 1 boy and 1 girl, were identified in the Alagza colony formed wash clubs consisting of teachers, and the students conducted hand washing workshops by using IEC material. The wash club then replicated the same workshops for the remaining students. 20 teachers, 8 male and 12 female, and 91 students, 40 boys and 51 girls, were made aware of hand washing by this action. It has tremendous results in hand washing practices in schools and at home due to a pledge of each student by delivering key messages like why, when, how to wash hands at their homes. तो ये बेसिकली
एक अच्छा इनिशिएटिव था अर्बन रेजिलियंस में और उसका बहुत ही अच्छा मुस्बत रिस्पांस मिला है लोगों की तरफ से हमें। Based on the feedback received from key stakeholders i.e., SSWMB and private waste collectors, this small but focused initiative resulted in a paradigm shift for community members and stakeholders to think differently to enhance urban resilience. अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम परवीन आरा है। मैं इस इलाके अल-अक़सा कॉलोनी में 5 साल से रिहाइश पजीर हूँ। अल-अक़सा कॉलोनी की ख़वातीन के लिए हिलाल अहमर वालों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और घर बैठी ख़वातीन जो अपना वक्त ज़ाया कर रही थी, उन्होंने अपने वेस्ट चीज़ों के ज़रिए से बहुत अच्छी चीज़ें, शोपीस, खेल खिलौने और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें जो है वो घर बैठे बना रही हैं और इस तरह वो 2-4 पैसे भी कमा सकती हैं। ये एक अच्छा कदम है और हम हिलाल अहमर के बहुत मशकूर ममनून हैं कि उन्होंने हमें अच्छी सोच दी और इसी सोच के साथ हम हिलाल अहमर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से और हम चाहते हैं कि इसी तरह के और भी चीज़ें हमारे लिए लाएं ताकि हम अपने वक्त को अच्छे से अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। The actions like waste segregation and behavioral changes for sanitation workers were the neglected aspects but now are priority list of the city government's plans and are most relevant in terms of ground needs. The enthusiasm of the beneficiaries, community, workers, government departments, prove that these actions are relevant and effective to make changes in the thinking of people through innovative approaches like segregation competition, personal safety training for sanitation workers, and promoting hand-washing practices. मैं शुक्रगुजार हूँ जर्मन रेड क्रॉस का कि उन्होंने इसमें हमारी मदद की। Thanks to the Red Cross Red Crescent, RCRC, movement to design a quality urban action kit. तो इंशाल्लाह लाइन डिपार्टमेंट्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो ऑन बोर्ड थे, तो उम्मीद ये है उन्होंने इंश्योर कराया कि ये इस चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे दूसरे इलाकों में।